प्रार्थनया वयं वर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषां पुनः स्वागतं करोमि। वयं सन्धेः अभ्यासं कुर्मः खलु। गतवर्गे अस्माभिः अवङ्गादेश तथा प्रकृतिभाव इत्यस्य विषये चिन्तां कृतवन्तः, चर्चां कृतवन्तः। तस्मात् पूर्वम् अच् सन्धेः अध्ययनं समाप्तं जातं खलु। सन्धिः इत्युक्ते किम्? इदानीं किञ्चित् पुनरावर्तनं कुर्मः। सामान्यरीत्या सन्धिः इत्युक्ते किम्? कः वदति, का वदति वा? What do you mean by सन्धि as per पाणिनि? सूत्रमपि अस्ति संहितायाः। कापि न वदति वा? कोऽपि न वदति। परः सन्निकर्षः संहिता इति सूत्रम्। द्वयोः वर्णयोः विना विरामम् उच्चारणं भवेत् तस्मिन् समये अनयोः मध्ये संहिता अस्ति इति उच्यते। अस्तु, अवगम्यते वा? What does the Samhita happens when two letters come side by side so that they are pronounced without any interruption in between them? These are called Samhita. उदाहरणत्वेन यदा वयं पश्यामः रामः इति, अत्र रेफ आकार मकार अकार तथा विसर्गः पञ्चवर्णाः सन्ति। एतेषु रेफ आकारयो आकार मकारयो मकार अकारयोः तथा विसर्गयो अकार विसर्गयोः मध्ये संहिता अस्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। We cannot pronounce the word Rama without continuously speaking them. If we take a pause in between, the word cannot be pronounced. Like if I say Ra and Ma, it does not convey the same meaning as Ramaha. Okay, this is what I wanted to know. कदा सन्धि भवति? सन्धि इत्युक्ते किम्? इदानीं यदा संहितायां वर्णव्यत्ययः भवति, if there is a change in the letter due to संहिता, okay, it becomes a sandhi karyam. So the first thing to be noted in the sandhi karyam is the change in the letter. यदा सन्धिकाय वर्णव्यत्ययः न भवति तदा सन्धि कार्यम् अपि न भवति। कदाचित् वर्णमेलनं भवेत्, कदाचित् प्रकृतिभावः अपि भवेत्। अस्तु, the more important thing is the change in the letter. कदा भवति, कदा नित्या भवति, कदा विकल्पेन भवति।
कः वदति? सर्वे विस्मृतवन्तः वा? न महोदय, नैव एकपदे नैव सन्धि कदा भवति इति इत्युक्ते अंडर 4 कंडीशंस। सन्धिः एकपदे नित्यं, समासे नित्यं भवति। समासे नित्यं, समासे धातु नित्यं भवति। उपसर्गयोः नित्यं। समासे नित्यं भवति। उपसर्ग धातु मध्ये संहिता भवति, एकपदे नित्यं भवति। नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः, नित्या समासे, हाँ। वाक्ये तु वाक्ये विवक्षाम् तु अपेक्षते. So they say karika. You always remain this by using karikas or shlokas, whichever Vaiyakaranas have given. Sahita ekapade nitya. Sahita ekapade nitya. When there is a single word, when there is a going to form a word, it is a compulsory thing. Nitya dhatu upasargayoho. And a upasarga is attached to a dhatu. We cannot avoid the Sahita. आगच्छति, आंग उपसर्गः यदा वयं गम धातुना सह योजयामः, तर्हि we cannot say आगच्छति, we have to say आगच्छति. If we say आगच्छति, that means we are intending a pause between a and gacchati. We are not intending a samhita here. Okay, आगच्छति, आगच्छतु, आगच्छेत्. अस्तु. नित्या धातुपसर्गयो, समासे नित्यम, समासे सर्वदा भवति, परंतु वाक्ये तु विवक्षाम अपेक्षते. वाक्ये मम विवक्षा अस्ति. यदा अहं कर्तुम् इच्छामि करोमि, यदा न कर्तुम् इच्छामि न करोमि. मम विवक्षा अस्ति. रामः इति हा, वयं कर्तुं रामः गच्छति, रामो गच्छति. रामो गच्छति हाँ, on रूपम हाँ, and पूर्वरूपं रामः भवति, गच्छति. रामः If we गच्छति अपि भवति. रामः वनं गच्छति, तर्हि वनं गच्छति अपि भवति. यदा सपसवर्ण कुर्मः, देन वी कैन हैड क्षम्यतां, विसर्गस्य उत्वं भूत्वा ओकारः भवति. रामो गच्छति अपि भवति, रामो वनं गच्छति अपि भवति. देन विसर्ग अनुस्वारस्य यही परसवर्णे यदि वयं कुर्मः, तर्हि अनुस्वारस्य स्थाने वयं ङकारस्य अपि योजनं कर्तुं शक्नुमः. So there are different types of sandhis happening here. But it is up to our vivaksha or wish, our choice. So ach sandhinam mukhyatve sandhayah panchadha vibhajyate. Panchadha. So ach sandhi, hal sandhi, prakriti bhav sandhi, visarga sandhi and swadi sandhi. साधारण रूपेण प्रकृति भाव संधि अच संधिषु एव पाठ्यते, परंतु इदानीम् अस्माकं स्तरम् अथवा सोपानं किञ्चित् वर्धमानः अस्ति. अनेन मया तत्र किञ्चित्, what should I say, I have shown it separately. Okay, so sometimes it happens, you just can't remember the word, so it happens. So first ach sandhi, prakriti bhav sandhi, हल संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि and swadi sandhi. So now we are starting the hal sandhi or vyanjan sandhi from today onwards. ach sandhishu kapi sandeha asti va kenapi? Is there any doubt? Is anyone having doubt regarding any ach sandhi or prakriti bhav sandhi? So we can discuss for some time, then we can take a sandhi, hal sandhi today. न महोदय. न महोदय. न महोदय.
Can everyone see my screen? Hal sandhihi. आम् आम् आं महोदय महोदय। हल संधिः अथवा व्यंजन संधिः। आदौ प्रत्याहाराणां पुनस्मरणम्। यतो हि व्यंजन संधिषु प्रत्याहाराणां विशेष प्रयोजनं भवति। झल खर चर जश तर्हि एतेषां ज्ञानम् अपेक्षते। तर्हि माहेश्वरसूत्राणि के हि स्मृतानि? कंठस्थीकृतं माहेश्वरसूत्राणि। वदामि वा ऐवन् ऋल् ऋक् एवोम् ऐवोच् वदामि वा लन् यमगणनं जभै जभगडधस् जभगडधस् कफ कफ छटत छटतौ कपै शशसर् हल् इति माहेश्वरसूत्राणि। उत्तमं। सुजाता भगिनी भवती अपि वदतु। हा ओ इयोन् रुलु एयोन् ऐऔच् हयवरट् लन् लन् न्यमगणनं झबै झबै घढधश् गडदश जबगडदश जबगडदश खपचटत चटतौ कपै शससर् हल् उत्तमम्। इति समर्थः माहेश्वराणि सूत्राणि। समर्थः भवान् वदतु। आं महोदय। माहेश्वराणि सूत्राणि अ इ उन् ऋलृक् ए ओङ् ऐ औच् हयवरट् लण् ञमगणनं जभै घढधश् जबगडदश् खफ छठथ चटतौ कपै शशसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। उत्तमं। कृष्णप्रिया भगिनी वदति वा? नमस्ते महोदय। नमस्ते, स्वागतम। बिना देखे नहीं आता महोदय। अच्छा, आप देख के पढ़िए, देख के पढ़िए। महेश्वर सूत्राणि माहेश्वर, नॉट महेश्वर, माहेश्वर। माहेश्वर सूत्राणि क्षम्यताम्। अ इ ऊण ऋ ऋक ए ओ अङ् ऐ औच ह य वरट लण नै म ण नै म अङ् ण न म ज भ ज्ञ घढधश् घढधश् जब गडदश् क फ च ठ थ च ट तव कपय शश तर हल। So please do remember this. Kanthasthi karaniyam. When I say jhal, when I say jhash, it should immediately come to the mind what varnas or what letters I am referring to. So let us have some pratyahara. Hal, sarvani vyanjanani, sarvani vyanjanani. Ach, sare saraha santi. Hal, sarvani vyanjanani. Can tell me what is al? What is al? सर्वे स्वराः व्यञ्जनानि। स्वराः व्यञ्जनानि। सर्वे वर्णाः। सर्वे वर्णाः। तर्हि इदानीं झल् झल् इत्युक्ते किं? मा पश्यतु, मा पश्यतु, केवलमेवं वदतु। जबै गडदश् जबगडदश् खपचटत चटतौ कपै शससर् हल्। उत्तमम्। So there is a small way how do you remember this, right? Varga chaturthaha, varga tritiyaha, varga dvitiyaha, varga prathamaha, ushmanaha. This is how you remember. You don't have to count the A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. A to B, A to Z, A to Z. That is how we remember the pratyaharas. So varga chaturthaha, varga tritiyaha, varga dvitiyaha, varga prathamaha, ushmanaha. That is the easy way to remember, isn't it? वर्गाणां पञ्चमवर्णाः विहाय सर्वे व्यञ्जनाः। सर्वे व्यंजन चाहिए ना? हाँ, उष्माणा चाहिए, सही है। उष्माणा भी व्यंजन में ही आ जाता है ना? नहीं, चर में वर्ग प्रथमा और उष्माणा।
इदानीं चर, खर खर नहीं मैंने खर नहीं बोला, चर बोला। हाँ, चर वर्ग प्रथमः श स स। वर्ग प्रथमा और वो- शशसर, हाँ, कपय और शशसर श तक। स स। तो खर किसको बोलते हैं? खर द्वितीय द्वितीय प्रथम और उष्मान। देख के नहीं बोल रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, मेरे पाठ है अभी। हाँ, नहीं इसमें जश नहीं। वर्ण, हाँ हाँ हाँ, जश। जश ने तृतीय वर्ग। अस्तु, हिना भगिनी जश। जश तृतीया एंड चतुर्थी, तृतीया एंड चतुर्थी, तृतीय वर्ण वर्णस्तंभ और चतुर्थ वर्णस्तंभ। नाउ वैसे जश, जब गढ़ दश, तो दश तो ओनली द ध नहीं, झश। See, when I झश। pronounce it changes, मूर्धन्य shakar and talavya shakar. If I so include talavya shakar, it will become varg fourth and third. If I say only मूर्धन्य shakar, then only fourth. right. जबाय घड़ धश. जबाई And if I add jab gada dash, so fourth and third. right. So yaya pratyaya, yaya pratyaya, starting from haya varak. विहाय सर्वे व्यंजनानि। व्यंजनानी, इसमें तो फिर श स सर भी आ जाना चाहिए। वर्गीय यह में तो नहीं व्यंजनानि दिख रहा। वर्गस्थाः। कपय तक आएगा। वर्गीय कपय तस्थाः पंचम चतुर्थ तृतीय द्वितीय starting from higher वरट या to हाँ, कपय to कपय। यवरट यमंगणनम कपय जपय। तो अनुनासिक व्यंजनानि ञमंगणनम and अनुनासिक यकार लकार and वकार। अनुनासिक यकार लकार and वकार, these are called अनुनासिक व्यंजनानि। वर्ग पंचमाः सन्ति, परंतु एते अपि सन्ति। So when I have written यकार लकार वकार अनुनासिक व्यंजनानि में कैसे आया? आएगा। हम आप अनुनासिक संधि सीखेंगे तब हम आपको उसको क्लियरली बताएंगे। उसको अनुनासिक में चंद्र बिंदु, यहाँ पर मैंने ये केवल अनुस्वार किया है क्योंकि वो चंद्र बिंदु हो नहीं रहा था, तो इसलिए ये अनुस्वार को चंद्र बिंदु पढ़िएगा। अच्छा, पर तो ऐसे चंद्र बिंदु सारे व्यंजन में हो सकता है ना? हाँ, लेकिन चंद्र बिंदु कब होगा? सारे बंधन में आप जब इसको रेफ करेंगे, मतलब हलंत करेंगे, तो उसके बाद में कोई आपको स्वर जोड़ना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो ऊपर में आप हो नहीं सकता। आप कोई भी, जैसे आप अनुस्वार कुछ भी करेंगे तो उसके ऊपर में स्वर जोड़िएगा तभी उसके ऊपर में आप बिंदु बैठा सकते हैं। आप कोई भी आप पकड़ लीजिए, केवल हकार है तो हकार के ऊपर में आप चंद्र बिंदु कैसे बैठाएंगे? इसमें नहीं आता है। चंद्र बिंदु तो will come on only in swaras. हाँ, Swaras and yaval. Yavala. So that is what I'm trying to say. It was difficult for me to type. So now Vyanjana Sandhya. There are 12 types of Vyanjana Sandhi or Hal Sandhis. Shtutva Sandhi, Shtutva Sandhi, Anunasika Sandhi, Jashtva Sandhi, Chartva Sandhi, Anuswara Sandhi, Para Savarana Sandhi, Chatva Sandhi, Purva Savarana Sandhi, Ngamudagama Sandhi, Tugagama Sandhi, and Satva Sandhi. 12 types of Vyanjan Sandhis we will going to learn. Okay. So, Sadharana Ritya Sarveshu Pustakeshu Shtutva Sandhi Taha Arambham Kriyate. Parantu Maya Saukaryartham Jashtva Sandhi Taha Maya Arambham Kriyate. Sarvata. So, I always start from Jashtva Sandhi to gradually familiarize ourselves with the Paninian way of doing the Sandhi. How, what and type Panini intended to the like Sandhi.
Okay. Can anyone just tell me what is a Jashtva Sandhi? You might have all learned the Sandhi. Just Sandhi is Third just letter. third Mahoday. Vargya Tritiya Agamanam. When? Okay. See, Yada Varga Tritiya is after the Swara, then Yadi Prathama Vargiya Prathama Bhavati Chet, that Varga Prathama will get converted into Varga Tritiya. Are you sure? By Swara- default, the last letter of the word becomes the third. Because it is Mahodaya. Samarthah vadatu. Vak Am becomes Mahodaya. vag. एकनिमिषं समर्थः वदति वदतु आम् महोदय अत्र प्रथमवर्णः इति तृतीयवर्णः इति आदेशः भवति जष्ट्ववर्ण जष्ट्वसन्धि जष्टुसन्धि so it is always a just आदेशः थर्ड वर्ण आदेशः परन्तु कस्य आदेशः केन कस्य स्थाने आदेशः भवति what is the sutra we have to understand अन्तिम अक्षरं कुचुटुतुपु Jal Jashi. पदान्ते झल् yes. पदान्ते Exactly. झल् अस्ति चेत् तस्य तृतीयवर्गस्य तस्य तृतीयवर्गस्य वर्णस्य तत् वर्गस्य तृतीयवर्णः आदेशः भवति what do we know here? I say for example atra padante jashto sandhi. You have a padante and padante. We are starting with the padante jashto sandhi. You all know what is the pada? Krishna Priya Bhagini vadatu sutram vadatu अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया जलां जशन्ते न पदं किं नाम पदं पदं अन्य कोऽपि मा वदतु टेन्शन् मा करोतु कृष्णप्रिया भवती जानाति केवल मुखात् न निस्सरति पदं वर्ड पदं सुप्तिगन्तं पदं सुबन्त शब्दाः तिङन्त शब्दाः ते पदसंज्ञां प्राप्नुवन्ति so when I say padante so the first condition is that it should be a pad either a tigantam or a subant padam now what we come to varga jhalam jasho ante jhalam shashti bahuvachanam jhalam jashah prathama bahuvachanam because shashti bahuvachana is going to be replaced by prathama bahuvachanam so kramena at that time or corresponding replacement okay so tat vargasya tritiya varnasya adesha bhavati varga prathamah varga dvitiyah varga tritiyah varga chaturtah pare yada padante asti chet तस्मिन् समये पदान्ते अस्ति चेत् तस्मिन् समये तस्य अन्तिम वर्णस्य अथवा पदान्ते यत् जश् झल् वर्णस्य जश् आदेशः भवति okay now it is interesting to note that Purvapadam is not Parapadam is not not required that is what I'm trying to say now. This just for sandhi is independent of any parapadam, paravarna. It will always happen. Always happen. But sometimes due to another sandhi happening, we are not seeing that particular rupam. For example, if I say vak, it will be a char rupam, right? And vag is the just rupam.
But if it is padante, it is va padante is also sutram. It can happen both char as well as jash. So in the form when we say pathatat pathatad, dvayoho api sambhavati. Patatu pathatat pathatat. So why? Because takare yada char varna asti, to chara api bhavati and vikalpena jash api bhavati. Jashtva is compulsory. It will always happen. It is not dependent on any parvarana. Like we are studied till date. Mrudu vyanjane athva swar varane pare bhavati ched jashtva bhavati. Khar varane bhavati chet chartva bhavati. But when I say that, it will always happen. But when when a khar varna comes, so it blocks the jashtvam. So we are not seeing the jasto part and we are only seeing the charto part. It will always happen. Jasto is the first sandhi to happen. It's a compulsory sandhi. But, and that is why we say that mrudhi vyanjana and sware pare. So when it is blocked by a khar varna or karkash varna, the remaining varnas are mrudhi vyanjanam and swar varna. It will allow it to pass. That swara varna and mrudhi vyanjana is allowing the jashtva to pass so that we can see the jashtva sandhi happening. Third varna. We are seeing the vargiya tritiya varnasya vayam pratyaksham kartum shaknumaha. Parantu yada khar varnaha bhavati, karkash varna, varga prathama, varga dvitiya, tata shashashar. Tasmin samaye vayam asya prathama char varna, prathama vargasya pratham varnam pashyamaha. So it will block that time. We will not be able to see. Avagamyate va? Not clear, sir. Not 100% clear. If you have any question, please do ask. Sir, now the first part is clear. See, the block part is the first part is clear. For padante yadi jhalam sthane. Don't go for the sutra. I am not yet started explaining the sutra. No. What I have explained, do you have any? I have just given you a general knowledge. I am not going by padanta. Sir, now you said the judge will clear everything. That means the. So here, if you say here, jhalam, we know what is jhalam. Varga prathama, dvitiya, tritiya, chaturtha, and shashashar and hal. So if it is ante is a saptami vibhakti. You mind that. So it will become a nimittam. It itself is a nimittam to make a jaštva sandhi. Yes. If that jhal varna happens at the end of a pada, so jash adesha is automatically happening. Yes. We have not said here anywhere that it's followed by swara varna or mridu vyanjana or khar varna. Nowhere it is written. Yes. So it will always happen. Yes. Understood? Yes, sir. Now, when we are doing the chartva, we'll come to next time. So it will block this jashtva happening. So we will not be able to see. For example, sometimes we have a particular glass. It will always allow to pass only blue light or green light. Otherwise, all other lights are blocked or colors are blocked. Yes. So it is similarly that it will allow only chartva to pass, char varna to pass, and not the jash varna. Clear. So the condition for the first prathama varna is always similar. Jhal. Varga chaturtha, varga tritiya, varga dvitiya, and varga prathama. And ushmanaha. Parantu asminapi ushmanaha kevalam talavya shakarasya, danta sakarasya, tata hakarasya jashtva na bhavati. Yatohi asmin kimapi likhitam nasti, parantu kevalam murdhanya shakarasya eva jashtvam bhavati.
हकारस्य तालव्यषकारस्य तथा दन्तसकारस्य जष्ट्वं न भवति. आम्. So when I say jhal, it includes all shashashar and hal, even ushmana. But this particular talavya shakara, danta sakara, and hakara is stopped by being jashta by different sutras. So it again blocks the jashta being happening. So they will not allow the jashtva. Okay. So padante jhal. Padante yada jhal varna asti. So ante is a very important thing. It has to be at the end of a padam. If it is apadante, it will not happen. Padante. Okay. So if a padanta is ending with a swara, will the jashtu happen? क्या बोले? No, Mahodaya, because it is a Vyanjana Sandhi, has to be a Vyanjana, it has to be a Padam. Okay, that is what I'm explaining. See, Jhalvarna, it does not include the swaras. So I asked if any word is ending in a swara letter, ikara, akara, akara, अथवा रमा इति अस्ति, तस्य झल्वर्णः न भवति, जश्वर्णः न भवति. यतोहि किमस्ति, यत्र झल्वर्णः एव नास्ति. झल्वर्णे सति वयं तस्य जश् कर्तुं शक्नुमः. झलां जशोन्ते. जशः इत्युक्ते प्रथमा बहुवचन, जशः. झलां षष्ठी बहुवचनम्. अन्ते सप्तमी एकवचनम्. So ante, when whatever is there in the saptami vibhakti, it is always the nimittam. Shashti sthana yoga, whatever the changes happen, it will always be demarcated by shashti vibhakti. And any adesha will be defined by prathama vibhakti. So jashaha, prathama bahuvachanam. Avagamyate va? आम्. We have done this sandhi, is a very basic sandhi, but now we are learning a notch higher. Okay, with sutram. So most of the guys didn't have this idea that it will always happen. It was always in our mind. Then sware pare athva mrudi vyanjane pare jasto bhavati. But this will always happen. Jastva is the first sandhi to happen. But if it is followed by a khar varna, then the just will not be happening. The char happening. It will be replaced by the first letter of that particular varga. Avagacchati va? Mahodaya, ekam samshayam, Mahodaya. It will not happen, or it regain its varna. It will not happen after where? Just first Justvam happen, then only yeah, if first Jastva happens, like if it is say for ka, kha, ga, ga, whatever, it will happen. The Jastva is always happening. And if it is followed by just any char varna, then it is again converted to the pratham varna. But Justvam is happens. Always Jastva will happen, and then again it is converted to chartva. Okay. You have to show it. So when we are doing the shutva and shtutva, we'll start with jashtva if there is anything. Then if it is chartva, and then if then the shtutva, if it is happening, then gradually it will change accordingly. This is the process. So purva varna padante ka kha ga gha kavargasya prathama dvitiya tritiya chaturtha chavargasya prathama dvitiya tritiya chaturtha tadvadeva tavargasya tavargasya pavargasya api varga prathama dvitiya tritiya and chaturtha.
सर्वेषु वर्णेषु परेषु जश्त्व भवति. What I said, if it is followed by a khar varna, if there is no khar varna, then it will happen jashtva. So if I say, if it is a khar followed by a khar varna, so chartva happens. But if it doesn't follow by any khar varna, then jashtva stays. Okay? That is why we have two rupams, chartva as well as jashtva. Two rupams. Vavasane is a sutram. It means optionally in the avasana means there is no varna following that. You can have either chartva or jashtva. So we'll gradually see the examples. So atra ach adhikam antaha iti maya svikrutam asti. Ach and antaha. So chakara jhal madhya asti, jhal varna asti. Chakara is a jhal varna. What is following after that is immaterial. So cha is a jhal varna. So tattat tasya vargasya tritiya varnasya adesha. Cha, cha, ja. So aj and antaha. A is not changing. Paravarna is not changing. Only purva sthane purvasya varnasya sthane adesha. Ajantaha, ajantaha, ajantaha. Similarly, halantaha, ajantaha. Ajantaha, aj varna yasya ante sa ajantaha. So, chakarasya jakarah bhavati. Atra swarah vidyate. Parantu idapi swarah nasti, viramo api bhavati. तस्मिन् समये अपि विकल्पेन जष्ट्व भवति एव. उदाहरणानि पश्यामः. वाक् अधिकम् ईशः. वागीशः. कवर्गस्य तृतीयवर्णः गकारः. वागीशः. शश अधिकं वारं. शश इति प्रातिपदिकं. षट् इति प्रथमा विभक्ति षट् भवति. तस्य षकारस्य डकार आदेशः. जष्ट्वे कृते मूर्धन्य षकारस्य डकारः आदेशः. कथं भवति? कोऽपि वदति वा? मूर्धन्य षकारस्य डकार आदेशः कथं भवति? षकारस्य स्तुत्वं भवति. Then the takara becomes dakara. No. Rutu rasana. एक निमिषं भगिनी. हाँ, कार्तिकेय महोदय भवान् वदतु. एक निमिष. कार्तिकेय महोदय को बोलने दीजिए प्लीज. शकारस्य टकारं भवति इति मम चिन्तनम्. अनन्तरं the takara will change to dakara. Why takara will happen? Why you see that takara will happen and not any other word? Any other varna? Why only takara? Because of course I have long back studied Strutva. I have always confusion on Strutva. Forget about the Strutva. We are learning the Jashtva Sandhi now. Forget about Strutva idanim. Forget about it. We are learning the Jashtva Sandhi. Oh, okay. My question is, why Murdhanya Shakara has a Dakara Adesha? Sir, Ruturashanam, Ruturashanam. Yes. You, okay. Ruturashanam. You are correct. Vadatu. Is it Ruturashanam Murdha. Ruturashanam Murdha. Sari, samana uchcharana sthane sati tatra tavargasya adesha tasya tritiya varna. Tavargasya tritiya varna dakarah adesha. all उच्चारण स्थानं समाम. पुनः पृच्छतु भगिनी. प्रश्नः महोदय, is it because all ta varga are murdhanya? Yes.
but we are doing for jashtva, so we need only the third letter. Third letter. That's Okay. why we take the. Only da. So मूर्धन्य शकारस्य डकारादेशः. समर्थ अवगच्छति वा? We are not considering आम् for महोदय shas also no problem. नहीं ऋतुरषणाम Chakara and sakara. ठोडो ऋतु रसाणा मूर्धा. In मूर्धा this way also किसमें? Mahoday chakara talavya chakaraka and No, no. antavya chakaraka. No, Also no. Ichu yashanam talu. This is ichu yashanam talu. Rutu rashana murdha. What you are telling is ichu yashanam talu. It's a talavya shakar. yes, Mahodaya. Why don't we consider for No, that it is also? blocked by some other sutras. That is why it is not Okay, happening. okay. Danta Okay. sakara, talavya shakara and hakara are not getting jashtva because they are another sutras which are blocking it. Okay. So, shash is the pratipadikam. Shash plus varam, shadvaram. Shadvaram. Shakarasya dakaradesha. Shadvaram. Chit adhikam rupam. Chidrupam. Takarasya dakaradesha. Up adhikam indriyam. Up ityukte varihi. Jalam. Up indriyam. Abindriyam. Samidh adhanam. Samidhadhanam. Samidadhanam. Samidha is a sort of stick we are giving for the homa. Okay? Small wooden sticks. Madhulit asti. Madhulid asti. Madhulidasti. Mahoday, one doubt, Mahoday. Up plus Indriyam. Samyak, up, I mean, I understood the Abhindriyam, but what is the relationship between up and Indriyam is one. Whatever the Indriyan is related to the water. Oh, okay. For example, we have tears in our eyes. Right. We have our nose running. So these are all related to. So these Indriyas are related to the water. Dhanyavad, Mahoday. Thank you. Dhanyavad. Pur dhanyavadah. So madhulit ityukte kim bhramaraha. सर्वदा मधुम लिहति. जो चाटता है मधु को बेसिकली वो मधुलिट भ्रमरः. मधुलिट अस्ति. टकारस्य डकारादेशः मधुलिट अस्ति. छाया जी अवगम्यते वा? महोदय आम् महोदय. अस्तु. तर्हि वयं कश्चित् अभ्यासं कुर्मः. शश अधिकम् आननः. वदामि वा? षडाननः. तमम्. सुप् अधिकम् अन्तः. समर्थः. अरे अहम् आह्वयामि. चिन्ता मास्तु. इदानीं सर्वे जानन्ति. अहमपि जानामि. सर्वे जानन्ति. इदानीं सुप् अधिकम् अन्तः. समर्थः वदतु. आम् महोदय सुबन्तः. आदेशः कः? कस्य स्थाने? सुप् इति जश् प्रत्याहार. पकार इति बकार इति. सुप् इति सुप् इति padanta. Pakare. So we have to have to see the whole word. We have to see that pakara, which is the jhal varna at the end. Ante jhal varna asti pakarah varga prathamah. हाँ. इदानीम् अन्तः तस्य वर्ग तृतीयः भवति. पकारस्य तृतीय वर्णः कः? बकार. तर्हि सुबन्तः. अवगच्छति वा? महत् अधिकं यशः. कार्तिकेय महोदय. महत् यशः. महद् यशः. अप अधिकम धीहि. लक्ष्मी महोदय. अब्धिः इत्युक्ते किं जानाति वा?
समुद्रम से water, समुद्र का kada, सी samudra. Sea, ocean. हाँ, समुद्र Abdihi, Varidhihi. There are different names. you can see Dihi. Kshirabdi Dihi. Kanyaka हाँ. Kshirabdi Is Kanyaka a- हाँ. Dirty abhiyans. हाँ. Dirty and say. Madhulit Dayate. Mahodik. Madhulit Dayate. सुधा जी. मधुलिट ढयते फिर से एक बार. मधुलिट ढयते मधुलिट डयते. धन्यवाद वाक् वाक् प्लस व्यवहारः. पद्मावती जी, पद्मावती पुलुरी. वाग्व्यवहारः वाग् व्यवहारः. उत्तमम्. मरुत् अधिकं वाति. कृष्णप्रिया भगिनी. मरुद्वाति मरुद्वाति. उत्तमम्. द्वा- शश प्लस भ्याम. सुंदरेश महोदय. षड्भ्याम. वाक् अधिकं देवता. कार्तिकेय महोदय. वदामि वा वाग् देवता सर वाग् देवता. उत्तमम्. उत् अधिकं गमः. सुजाता भगिनी. उद्गमः उद्गमः. आपका थोड़ा वीडियो और नीचे रखिए, हमको आपका मुंह दिखाई नहीं दे रहा है, अभी इसीलिए हम. हाँ अभी ठीक है. हाँ ठीक है उद्गमः. तत् प्लस यथाः. छाया जी. महोदय तत् अधिकं यथा. तद्यता तद् यथा. उत्तमम्. सत् अधिकं गुणः. लक्ष्मी महोदय. सद्गुणः. स्वर्गात् अधिकम् अपि. उषा दुबे महोदय. शृणोति वा? स्वपिति अस्ति वा? स्वर्गात् अपि स्वर्गादपि. स्वास्थ्य सम्यक् नास्ति महोदय. अस्तु, क्षम्यतां, क्षमां याचे, हम न जाने. महोदय वो मुझे नहीं समझा, वो श का ट क्यों वो तो जो आपने बता पूछा रहे थे। क्यों नहीं समझा? तो पूछना चाहिए ना, तभी टोकना चाहिए कि मुझे नहीं समझ में आया, मैं एक बार और समझा देता. देखिए, जो शकार होता है वो मूर्धा से उत्पन्न होता है. उसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा. तो हम लोग संधि जब करते हैं तो उसको जब रिप्लेसमेंट खोजते हैं तो सामान्य रूप से यदि वर्गीय व्यंजन नहीं मिलता है तो उसका उच्चारण स्थान समान है, वो हम लोग समानत्वम देखते हैं. तो मूर्धा का उच्चारण स्थान में ये शकार तो पड़ा, तो उसके साथ में उसमें कौन सा वर्ग उसका उच्चारण स्थान में आता है? तो ऋतु रसाणा मूर्धा, ये सूत्र हम लोग ने पढ़ा है. तो टवर्ग आता है मूर्धा से. तो टवर्ग है, टवर्ग का तृतीय लेटर जो हम लोग को जश में चाहिए वो डकार है. तो शकार का जश तो होगा डकार. डकार. धन्यवाद धन्यवाद. शश अधिकम दर्शनानि. पल्लवी जी, श्रूयते पल्लवी जी? षट् दर्शनानि महोदय. नहीं सॉरी षड् दर्शनानि. षड् दर्शनानि. ड भवति न शकारस्य डकारः भवति. इदानीं अहं यां पृच्छामि सा एव वदतु. अप् अधिकं जम्. पल्लवी जी, अप् अधिकं जम्. किम्? अप् अधिकं जम्. अस्ति. अप् पकारस्य बकार भवति जलाञ्जस्वन्त्यादेन. अब्जम्. अब्जम्. उत्तमम्. अप् अधिकं धिः. सुंदरेश महोदय. अब्धिः. समर्थः. जगत् अधिकं गुरुः. महोदय जगद्गुरुः. जगद्गुरुः. उत्तमम्. दिक् अधिकम् अम्बरम्. शकुन्तला महोदय. शकुन्तला महोदय कृपया वदतु. दिक् अम्बरम् दिगम्बरम्. दिगम्बरम्. उत्तमम्. So I have started this. I started understanding about Digambaram. I used to read this, all this, the
what do you call all the Dattatreya and all those things, Digambara, and then even in Shiva Stotram also Digambara. I was wondering what is this. Then I have started understanding. After coming to know about this, then I have understood, sir. So there is a difference between Digambaram and Digambaraha. Janati va? Samasa changes. Samasa changes. Digambaram is Diga Ambaram. So Diga is which is a qualifies Ambaram, which is an Akasha. Okay. So Dig and Akasha is a Karmadharaya Samasa. Parantu Dig Ambaram Yasya Saha Bahuvrihi Samasa. Sab Bhagavan Shakshat Shiva Digambaraha. So which is not Digambaram, which is Digambaraha. Digambaram means what? Digambaram is just a Ambaram, which is a Dig, I mean Shunya. Akasha eva Abhushana Yasya. Akasha and Abhushana. Or Vastra. Ambaram is basically Vastra. Correct. So the Vastra, the Dika is defining that Ambaram. Okay. It is a Visheshana to Ambaram. If you say like this, so Karmadharaya Samasa. Correct. Now, if I say Bahuvrihi Samasa, Dig Ambaram Yasya Saha. Dig Ambaram Yasya Saha. जिसका दिशा ये वही एक केवल उसका परिधान है, वो शिव, उसको हम लोग नंगा नहीं बोल सकते, दिशा पूरे सर्व दिशा उसके परिधान है. Even there is no difference between Karmadharaya and Bahuvrihi, sir. नहीं है, because Karmadharaya is defining the particular Ambaram. It's a Visheshana to Ambaram. But in the Bahuvrihi Samasa, it defines to a third person, which is neither Dik or neither Ambaram. Correct, sir. Yes, agreed. Okay? Yes, sir. The person who is having the clothes, which is the Dik. Excellent, sir. Yes, which is a Bahuvrihi Samasa. Dhanyavad, Bhari. Right, got it. So, Bahuvrihi always represent the third person. Okay. Tat adhikam eva. Gnanam Bala Mahoday. Mहोदय, तदेव. Dik adhikam dhanam. Jyoti ji. Digdhanam. Mahoday. Dik adhikam ambaram. Dhanam. Digdhanam. 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 Kavargasya tritiya varnaha gakara. Uttamam. Pravrut Jalam. महोदय, वदतु. दिगंबरम हो सकता है क्या? हाँ, दिगंबरम हो सकता है. दिगंबरम का मतलब होता है जो अंबर है वो दिशा है, वो बस, दैट्स ऑल. जैसे पीतांबरम हम लोग बोलते हैं. हाँ. अब उसमें डिफरेंस क्या है? पीतांबरम जो एक वस्त्र है जो येलो कलर का है, और पीतांबरह जिसने वो येलो कलर का वस्त्र पहना है, वो पीतांबरह. और पीतांबरम क्या हुआ? जो येलो कलर का वस्त्र है, केवल जो वस्त्र का एक विशेषण है, येलो कलर. सो पीतांबरम इज अ वस्त्र परिधान. पीतांबरह इज अ विष्णु, द वन हु इज वेयरिंग द पीतांबरम. Sir, one doubt, sir. Dik Dhanam is again just alam, no? Yeah, Dik is, I mean, some sort of a. It is sufficient. Alam, no? Alam. No, Dik is some sort of a, what you say. Dhanam is Dvitiya Vibhakti, and Dik Dhanam. Dhan. So it is. Dhik, what is the meaning of Dhik? Is that yes, Dhikkara. When you say Dhikkara. Dhikkara, okay. Okay. Achha, yaha dhanasya dhikkaram karati saha dikdhanam va? Dhanaha. So this is how we learn the samasa. We may make mistake. We might may make some mistakes, but this is how we learn samasa. Strak iyam. Strak iyam. Vadami va. Vadatu. Stragiyam. 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 महोदय, प्रावृट् जलम, प्रावृट् इत्युक्ते किं महोदय? अर्थः
अर्थं किं महोदय? एक निमिषम्। अस्तु। स्रगीयं स्थापित महोदय। Pravroot is a barley water. ओहो, Pravroot jalam is a barley water. Or srag means charmam, sir. Srag means skin. Srag, no, it is tvach. I have to find out just one. Srag means not skin, sir. No. Srag. Srag is माला अस्ति वा? माला आणि प्रावृत का क्या बोला? बार्ली बार्ली वाटर हम लोग जो पीते हैं वो प्रावृत जलम। वो स्रग ईयम होता है महोदय। हाँ, स्रगीयम लाइक हाफ ग। हाँ नहीं, ग को जब आप इकार से जोड़ेंगे तो स्रगीयम हो गया ना, स्रगीयम। हाँ स्रगीयम, हाँ that's what। ऐसे देखिए स्रगीयम। हाँ यस। इदानीं संधिं विभजत, you have to bifurcate। षड् दर्शनानि वदतु समर्थः, आरम्भं करोतु। हाँ महोदय, षड् दर्शनानि, षट् अधिकं दर्शनानि। उत्तमं। शश और षट् दर्शनानि। स्वर्गादपि, पद्मावती जी, उपलुरी। हाँ जी, स्वर्गात् अपि योगे स्वर्गादपि। उत्तमं। वाक् व्यवहारः, कार्तिकेय महोदय। वाक् अधिकं व्यवहारः। उत्तमं। कस्मिन् परिवर्तनम् अभवत् महोदय? ककारस्य परिवर्तनम् अभवत् महोदय। ककारः जल् वर्णः अस्ति, ककारस्य वाक् इति पदान्तम् अस्ति, so it fulfills both, so that is why ककारस्य परिवर्तनं तृतीय प्रथमं तृतीयं परिवर्तनम् अभवत् महोदय। उत्तमं। महदीदम् एस् लक्ष्मी महोदय। महत् प्लस इदं, महत् दकार स्थाने दकार। जगत गुरुः, उषा जी, उषा दुबे महोदय, आप ऐसे ही बोलिए। हाँ, जगत अधिकम गुरुः। उत्तमं। चित्रा राव महोदय। षड्भ्याम, चित्रा राव महोदय। षट् प्लस भ्याम। षट् प्लस भ्याम और प्रातिपदिक षष् प्लस भ्याम। उद्गमः, कृष्णप्रिया जी, उद्गमः। उत् अधिकं गमः, उद्गमः। अधिकं गमः। महद्यशः, सुधा जी। महत् अधिकं यशः। महत् अधिकं यशः। धन्यवादः महोदय। उत् इति उपसर्गं वा पदं वा? हाँ, उत् उपसर्गं, but all nipata, beta are called nipata. That I am coming. Your question is whether is the padanta or not. All nipatas are by default padas. Although we can't see the because they are called avyayas, but avyayas are subantas from which the pratyaya has been taken away. So there is no more declension in the vibhakti pratyaya. Mahodaya, this again I have heard from many times. This upasargas have been considered as subanta. Sorry, padams. Padas. Is there any sutram for that, Mahodaya? They are called nipata, right? Yes, so, sir. That is why it is called padasanya. Okay. So they are not like useful in individuality. You cannot have so ang and ut. It doesn't have any meaning per se. But when added to a dhatu, it enhances the artha or the meaning of the particular dhatu. Yeah. Either it enhances or even sometimes reverses also. Whatever, it changes. Whatever. Right. Thank you, sir. Dhanyavad, Mahodaya. Brihad gatraha. Who vadati? Jyoti ji? Brihad gatraha.
plus आम् महोदय बृहत् तावकस्य प्रथम अक्षरं पूर्वपदस्य अन्तिम आगच्छति बृहत् गत्रः वा महोदय गात्रः गात्रः धीमद्वरः धीमद्वरः छाया जी धीवत् अधिकं द्वरः नो पुनः एक वरः बार धीवत् वरः धीमत वरः धीमद्वरः वरः नेक्स्ट टाइम आप समर्थ के साथ आप भी अपना नाम भी लिखिए छाया प्लस समर्थ आम् महोदय Dhimat Varaha is a beautiful word, sir. हाँ That is generally a girl will be looking for it. here Varaha is not a husband. Huh? Vara does not mean a husband. Then I was thinking Varaha is a male, na, sir. No. Varaha means varam. Vara. वरः इत्युक्ते किं महोदय? Something good. That is something good. Oh, it doesn't mean that it's okay. No, Varaha it's not a husband. No, so Varaha means actually who the वरः इत्युक्ते मून्, no? धीमत् पुरुषः न वा हाँ धीमत पुरुषः अपि धीमत इत्युक्ते there are different meaning of हाँ धीमत यस्य धी अस्ति having बुद्धि बोलते हैं ना बुद्धि नहीं उसको धी बोलते हैं उसको पुरुषार्थ भी बोलते हैं मम जामाता धीमद्वरः अस्ति अशुद्धं वा? न वर इत्युक्ते मून्, नो? BOON. वो वरः देखने ईश्वर वरः ददाति। जनरली श्रेष्ठ होता है उसको वर बोलते हैं हम लोग वरम बोलते हैं अब मून है कि नहीं वो एक मिनट देखता हूँ मैं you said right, sir. Varaha is Sreshtaha. Generally it is taken as Sreshtaha. जमाता को भी वर बोलते हैं जमाई को सो धीमत वरह इज करेक्ट जमाई को भी आप बोल सकते हैं धैर्यवान होता है क्या धी का अर्थ धैर्यवान धैर्यवान यस्मिन् धैर्यता अस्ति धीमत अबादीनाम एस लक्ष्मी महोदय उच्चैः वदतु म्यूट् अस्ति कदाचित् अप् अधिकम् आदीनाम् उत्तमम् महोदय षड्वादने है ना तो शशवादने नहीं होता ना षट खाली ना शश वो प्रातिपदिकम है तो यदि शश भी होगा तो हम लोग को षड ही लिखना पड़ेगा हाँ तो शश को हम लोग यदि चर्त्व करते हैं तो षट होगा और जश्त्व करते हैं तो षड होगा नहीं आपने ऊपर जो बोला ना एक तो प्रातिपदिकम शश ही होगा क्योंकि शकार को डकार जश्त्व होता है तो षड वादने ही होगा लेकिन हम लिखेंगे तो शश लिखेंगे प्रातिपदिकम शश लिखना है का षट लिखना है आप षट लिखेगा तो भी उसमें जब वादनम ही ये है आपको मृदु व्यंजन आएगा तो फिर चेंज हो जाएगा जश्त्व तो होना ही है तो अब डायरेक्ट जब शश को जब डकार किए हैं तो अब डायरेक्ट ही शकार का डकार कर दीजिए ओके क्योंकि पहले जश्त्व होगा बाद में चर्त्व होगा हाँ सुबंतम सुबंतम आर्निका जी बोलेंगी आर्निका जी भवती श्रोति वा नमस्ते नमो नमः स्वागतम भवतः भवत्याः धन्यवाद तो पता नहीं सही बोलूंगी या नहीं पता नहीं मुझे सुबत कोशिश कीजिए अधिगम सुबंतम पूछा मैंने हाँ वही बोल रही थी सुबंतम शुभ अधिगम तम नहीं सुंदरेश महोदय भवान वदतु अहं वदामि सुप अंतम सुबंतम सुप और अंतम सुप और अंतम
हाँ, शुभ आपने जो अंतम। शुभ जी। शुभ बोला तो बकार तो ऑलरेडी जस्ट हो गया है। शुभ का मतलब कुछ नहीं होता है, शुभ और अंतम। शुभ अंतम, शुभ है वो प्रत्यय है, शुभ प्रत्यय, विभक्ति प्रत्यय जो बोलते हैं वो शुभ प्रत्यय बोलते हैं। जिसके अंत में शुभ प्रत्यय लगे हैं वो शुभ अंतम। उत गच्छति, उर्मी जी। उत गच्छति, उद्गच्छति। उत अधिकम गच्छति। उद्गच्छति। अबादीनाम, शकुंतला जी। अपा अधिकदिनम् अबादिनम् पफब नहीं, फिर से एक बार, पुनः एक बार हम। अपा पफब तृतीय अपा क्यों आपने देखा, मैंने क्या बोला था? यदि इस अपा में अंतिम अक्षर क्या हुआ, आकार हुआ, स्वर है, तो अपा तो होगा नहीं। तो अपा होने से तो जस्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग को झल वर्ण चाहिए। स्वर आपने बोला तो स्वर के बाद में तो जस्ट तो होगा ही नहीं। हम बदामी महोदय। एक निमिषम, उनको सबको कोशिश, कोई भी समझना नहीं चाहता है, समझ में नहीं आ रहा है तो मैं सिखाऊंगा ना उनको। आप लोग सब जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानता उसको तो मुझे बुलाना पड़ेगा ना। फिर क्लास में आने का फायदा क्या हुआ? शकुंतला जी। हाँ अप दिनम अप अप दिनम अप आदिनाम, अप आदिनाम, अप आदिनाम, अबादिनाम। अप आदिनम अबादिनम। धन्यवाद। तो पकार जब अब अंत में आता है वो झल वर्ण में आता है। ठीक है, तो यदि आप अपा करेंगे तो पकार के बाद में आकार आ जाएगा, वो स्वर हो जाएगा, तो वो झल में नहीं आता। अप हाँ, अप होगा तभी आदिनम। उसके बाद में उसको जश्व होगा। धन्यवाद। आदिनम। धन्यवाद। अब अबादिनम। जो वीडियो ऑन कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं, वो करिए, क्योंकि मुझे समझ में आए कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन सो रहा है। अस्तु। अत्र एकं श्लोकमस्ति दीयते। चलदूरगहारं मृगधरं चिदालंबम सांबम। चलिए, उसमें से जश्व संधि कौन कौन सी है बताइए। चलद, हाँ यस, कार्तिकेय महोदय, फर्स्ट वन। फर्स्ट वन सर। चलत प्लस उरगहारम। उरगा मीन्स सर्पम। ओके, सर्पम, हाँ। चलत प्लस उरगहारम. But why the chalat word were used, I don't know. But this sandhi is over done. But meaning wise, I'm not clear. Why chalat is a shatu pratyaya? जले जले स्थिता, इसलिए जलत उरगहारम। No, जले नहीं, चलत अस्ति। chalat, because that uraga चाहिए ना. Sir, that means you can say that uraga is in motion. Is in motion. Correct. That is why it is. Chalata uragaharam. The uraga is means the snake, one who moves by the chest. Uragaharam. Uragaharam, yes. He has got that. Shiva has got uragaharam. Shiva, which is moving, which is not like a plastic one which is kept, right? Yes. And then that we see in the movies. Yes. So, and then chit plus alambam. Chit plus alambam. Adhikam alambam chidadambam. That's all in the Pratham one, sir. That's all. Sujata Bhagini, Dvitiyam karoti va? Yad vibhutimat sattvam श्रीमदूर्जितम् एव वा. बताइए. हाँ, यद्यत विभूति. यद्यत नहीं, इसमें भी है, जश्व है. यद्यत विभूति, इसमें भी जश्व है. यद्यत में भी जश्व है. यत विभूति. हाँ, विभूति मत सत्वम. हाँ, सत्वम. श्रीमत ऊर्जित और ऊर्जित.
एव वा, हाँ, उत्तम। ऊर्जितम एव वा। अत्र यदि तद् नहीं वा, यदि तद् यन्सन्ति एक निमिषम्, अन्य कोऽपि म्यूट् भवन्तु सर्वे। चित्रा जय महोदय, चित्रा भगिनी। तत्तद्देवावगच्छ त्वं मां तेजोष संभवम्। तद् देवावगच्छ त्वं मां त्वं मम न जानामि न जानामि तत्तत् एव। तत् देवावगच्छ। देव नास्ति, तत्तत् एव। व्हेन आई एम बाइफर्केटिंग, देव तो अस्ति एव अत्र लिखितं, परन्तु तत्तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। अस्तु महोदय। Mother, I have couple of questions. इसी के संदर्भ में है, या आपका तो कोई दूसरा ही सूत्र से आएगा? इसमें है तो जस्तो में ही है रिलेटेड। नहीं, हाँ जी, हाँ, जसवंत रिलेटेड है तो पूछिए। यद्यत् विभूतिमत्, तो यद यहाँ यण संधि नहीं है, यदि अत्विभूतिमत् नहीं, उसका कोई मीनिंग नहीं होता ना, यत यत विभूतिमत, जैसे जैसे। और तो सेकंड क्वेश्चन है तत्तदेव, सो तत् एव, तो यहाँ तद क्यों नहीं हुआ? अवगच्छ, क्या तद क्यों नहीं हुआ? तद तो है ही नहीं, तत्तेव, तदेव, उसमें भी आप कर सकते हैं, इसमें तो जस्ट तो हुआ ही है, इसीलिए तो दकार है। तत् एव नहीं, तो वो एव में हुआ है, पर तत् के बीच में जैसे यद्य, तत् के बाद में क्या आया है? खर वर्ण है, तो जस्ट तो नहीं होगा वहां पर, चर तो होगा ना। मैंने आपको क्या बोला था? तत्, उसके बाद में तत् के बाद में यदि खर वर्ण आ गया तो वो जस्त को बांधेगा, तो जस्ट तो आपको दिखाई नहीं देगा और चर तो आएगा। धन्यवाद। परंतु यहाँ पर द्वितीय बार में जो तद्दत एव जब आया तो वो स्वर वर्ण है, तो उसने पास कर दिया जस्व को, तब आपको दकार दिखाई देने लगा यहाँ पर। और एव अवगच्छ सवर्ण दीर्घ हो गए ना। हाँ। स्वयं पंचमुखः पुत्रो गजानन षडाननौ। कृष्णप्रिया भगिनी। स्वयं पंचमुखः पुत्रौ गजानन षडाननौ। स्वयं पंचमुखः पुत्रौ गजानन शश आननौ। हाँ, शश अधिकम आननौ। अधिकम आननौ। एकमेव अस्ति। एकमेव। दिगंबरः कथं जीवेत् अन्नपूर्णा न चेत् गृहे। दिगंबरः कथं जीवेत् अन्नपूर्णा न चेत् गृहे। करोमि उमा एच महोदय। हाँ, दिक् अधिक अंबरः जीवेत् अन्नपूर्ण। अधिक अपूर्ण। अपूर्ण। और कोई मत बोलिए प्लीज। जीवेत अपूर्ण। और आप सोचिए क्या हो सकता है? अपूर्णा तो नहीं है अभी, दो न यहाँ न है ना। हाँ। तो अन्नपूर्णा। हाँ। जीवेत अन्नपूर्णा न चेत गृहे। हाँ। न चेत गृहे, ये शिव और पार्वती का संसार दिखा गया इसमें। अस्मिन् वदति यद स्वयं पंचमुखः, पंचमुखः शिवः अस्ति, पंचसु मुखेषु स खादति। पुत्रौ गजाननः षडाननौ, एक को गज की तरह जिसका मुख है उसका भी भूख बहुत है, और दूसरा का 6 मुख है, तो वो भी खाने में इतना ही है, उसको खाना है। दिगंबर है, उसके पास कुछ नहीं है,
तो इसका संसार कैसे चलता है? यदि अन्नपूर्णा है पार्वती, तभी उसके घर में है, तभी इसका संसार चलता है। अद्भुतः महोदय। वंडरफुल। चेत चेत गृहे, उसमें भी चेत चेत और गृहे। चेत और गृहे, हाँ, चेत गृहे, चेत गृहे। अस्तु। चलत अधिकम उर्गहारम चित आलंबम यत यत विभूतिमत श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत् तत् एव अवगच्छ। यहाँ पर षट आननः और शश आननः जैसे भी लिखे, दिगंबरः दिक् अंबरः, जीवेत अन्नपूर्णः जीवेद अन्नपूर्णा, चेत गृहे चेत गृहे। ठीक है, सब सर्वे ही अवगम्यते वा? कोई शंका? आम महोदय, आम महोदय, शंका नास्ति महोदय। धन्यवादः महोदय। So what we have learned is padante jashtvam. Idanim padamadhye jashtvam. Padamadhye. So when I say padamadhye, so we are expecting another varna to follow. If it is a padanta, it can be avasana also. But when it's a in between a varna, in between a shabda, so we are expecting another varna to follow. So what is the sutra saying? Jhalam jash zashi. Zashi. What is jash varna? Pratyahara says. Jabagada dash. Aha, jash, zash. That means fourth and third. Fourth and third. Fourth and third. Fourth and third. Mind only fourth is the shadanana kasha. Murdhanya shakar, which is jash, and this is jash, jash. Jash and fourth and three. So fourth and three. So if the jhal varna is following by fourth and third varna, so the fourth, the jhalam sthane jashadesha bhavati. So 1, 2, 3, 4 is followed by either 3 or 4. So the jhal varna 1, 2, 3, 4 will be converted into jash varna. Katham bhavati vayam pashyamah. Atra apadanta jhal, padanta nasti, padanta jhal varna jashto mayam pathitvantah. Buddha dhatu plus trich pratyaya. So these are happening always when we are making some sort of rupam. Like maybe a tigant padam or krudant padam subantam. Okay. So buddha dhatu asti trich pratyaya. Trich pratyaya katham bhavati karta rupena. Anul truchau iti sutram. Anul pratyaya और trich pratyaya का शब्द कर्ता को निर्देश करते हैं. बुध प्लस त्रिच. सो त्रिच में से चकार की संज्ञा हुई कौन से सूत्र से? चकार की संज्ञा चुटू सर, चुटू. अभी भी चुटू है भगवान. हलन्त्यम. क्षम्यताम. Because sometimes we toggle between so many sutras. There is this thing. This is halantyam, 100% done. Halantyam. So now, this is a trich pratyaya, which is the ardha dhatuk pratyaya. So it will make a gunadesha. Sarva dhatuk, ardha dhatukayoho or puganta laghupadasya cha. So atra puganta laghupadasya asti. Upadayam laghu ik asti. Budh asti. Khalu? Tasya bodh iti abhavat. Bodh and tr. There is one more sutra is happening here. We will come later on. So we just remember that this sutra makes takarasya dhakara, which is not relevant in this particular prakriya. So bodha plus dhru. Now here, this is dhakara is the varga chaturtha, which is more important for us. And now, and dha
here is also Varga Chaturtha. हम्म So Jhal Varna followed by a fourth Varna, Varga Chaturtha, so which is Zash Varna. So the Jhal Varnasya Jash Adesha. So Bodha Dhakara will become Dakara. Bodha Dha. Bodhru. समझ में आया? हाँ ये प्रथम वन सर पुनः एकवारं तो बुध प्लस त्रिच, त्रिच प्रत्यये चकार से संज्ञात्रु इति अवशिष्यते. So bodha plus tru. Now because this is a puganta laghupadasya, it is ardha dhatuk pratyaya. So puganta laghupadasya ityanena उपधायाम विद्यमानस्य लघु इक्वर्णस्य गुणादेशः. So bodh iti bhavati. Bodha plus tru. Yes. Now there is one more sutra here, jasas tator dhodha. So this is a sutra which converts the takara into the dhakara. Okay. So tatru will become dhru. Yes. Dhru is a fourth letter. Yes. Of the Vargiya Vyanjana. So Yes. what we have said is Jhalam, Jasho, Jhalam, Jash, Zashi. Zashi. Zashi is a word fourth and third. Yes. 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 If it is fourth or third happening means it is a nimittam. Yes. Here it is a nimittam because it is in Saptami Vibhakti. Jashi. Because yes, Saptami is nimittam. Agreed. So, if it is followed by a Jash Varna, which Yes. is a fourth letter, so the Jhal Varna, which was preceding the Jhal Varna, the Bodh, Dhakara, it is Dhakara will be converted to Jash Varna, Dakara. So Bodh plus Dhr, Bodh. Similarly, Clear. Buddhi, Tin Pratyaya. Okay, sir. Buddha plus Tin Pratyaya, Buddha plus Ti, Bodha plus Ti, and Buddhi. Clear, Mohdaya. 100%. धन्यवाद. धन्यवाद. I had just given an example like Buddhi, right? So Buddha plus Ktin Pratyaya. Ktin. What is the speciality of it? Buddhi plus tin is in that. No, Buddha plus Ktin. Yes, sir. Buddha Here- plus tin. Yes. I understood, sir. No, we have not understood. Yeah. Why it is called Buddhi and not Bodhi? Yeah, that's what I'm saying, sir. Buddha plus ultimately it remains as all this all thing will go and then it becomes ta. Then buddhi ti it becomes ti. The ti becomes Why not Bodhi? Sir, I'll tell you again. The ta becomes the, right? Okay. Now Buddha plus that again this sutram dhu, the dhu will become Buddha plus dhi, right? Actually, so this the again fourth one. My question is again that because of the Trich Pratyaya, we had converted Ardha Dhatuk Pratyaya, so Puganta Laghu Padasya iti prasakti asti. Correct. So बुध का बोध हुआ, तो बुध और तीन प्रत्यय है, उसमें भी I'll tell you, sir. I got it. King Ticha Sutrena कित Guna प्रत्यय Nisheda Bhavati. अस्ति, Guna Nisheda कित Bhavati. प्रत्यय अस्ति, अनेन किंगति च सत्रेण गुणस्य प्रसक्तिः नास्ति. निषेध भवति महोदय. धन्यवाद. हाँ, नहीं समझा है मुझे. ये अभी का नहीं, मैंने जस्ट प्रसंग आया तो मैंने बोल दिया. बुध और कितिन क त न कितिन प्रत्यय. सो यहाँ पर ककार की इत् संज्ञा हुई और नकार की हलंतम से हुई तो ती बचा. तो प्रत्यय कैसा है? वो कित प्रत्यय है. तो हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा था? कित कित प्रत्यय के परे से गुण और बुद्धि निषेध होता है किंगतीच सूत्र से. तो गुण नहीं हो सकता, तो बुध का बुध ही रहेगा. तो बुध और तीन रहेगा, तो बुध और ती, और फिर ये झसस ततोर धो ध से तकार का धकार बुद्धि, और दकार का धकार, बुध का जो धकार है उसका दकार, तो बुद्धि.
लिख करके बताना पड़ेगा। समझ में आ गया? हाँ, बोध हुआ है ना, इसलिए मुझे समझाने बुद्धि ये पहले। दूसरा सूत्र। हाँ, आपने पहले बोध और त्रुच, मैंने क्यों ये अचानक निकाला थे हम, एक मिनट। अच्छा चलिए, मैं आपको लिख करके समझा देता हूँ। ये अभी यहाँ पर नहीं लगेगा, फिर भी आपको मैंने समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हम लोग ने यहाँ बुध और त्रिच करके बोध किया, ठीक है, बोध त्रु किया, तो सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे बुध, लेकिन यहाँ पर अभी प्रत्यय चेंज हो जाता है, 3 हो गया, ठीक है। दिखता नहीं इधर। दाहिना साइड में देखिए ना, दिखता है क्या? ना ना महोदय, ना दृश्यते। ओके ओके, दृश्यते महोदय। मैं फिर से शेयर करता हूँ। इदानीं दृश्यते वा? हाँ, दृश्यते। अब बुध और 3, ठीक है। हाँ। सो बुध का अभी बुधि रखते हैं, और 3 में से ककार की संज्ञा हुई कौन से सूत्र से हुआ? लक्ष्य को तत्विति। हाँ, और नकार की? नकार के हलंत। हाँ, तो बचा ती। अभी तक सब समझ में आया? हाँ। अब ये सूत्र लगेगा जो झषस तथोर्थो धो ध वाला, जो तकार को धकार में बदलता है। तो यहाँ पर मैंने इसको धी कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, धकार है वो वर्ग चतुर्थ है, वर्ण चतुर्थ है, कवर्ग का चतुर्थ वर्ण है। हम लोग को झषी में वही चाहिए, चतुर्थ या तृतीया। तो यदि वो है और आगे में धकार है, वो झल भी है, झल है ना। तो यदि झल के बाद में कोई झष वर्ण आता है तो झल का जश हो जाता है। तो क्या हुआ? बुध और धी। बुद्धि, अभी समझ गए। समझ में आया? धन्यवाद। और इसमें बू का बो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 3 प्रत्यय है, वो कित प्रत्यय है, क तीना, क है, ककार का लोभ हो गया, तो कित गित प्रत्यय का निषेध होता था। किंगति च सूत्र से गुण का निषेध, सो बोध नहीं हुआ, बुद्धि। समर्थ अवगम्यते वा? हाँ महोदय। If you are doubting, if you don't know anything, please feel free to ask. Okay? Similarly, अत्रापि पश्यन्तु, लभ प्लस क्त, सेम कित प्रत्यय अस्ति अत्र? लभ तकारस्य धकार भवत्, लभ भकार अस्ति वर्ग चतुर्थः, प फ ब भ तस्य वर्ग तृतीयः, लब्ध लब्ध। झलाम जश, झलाम जश झषि। समझ में। लब्ध कहाँ से हुआ? क्त प्रत्यय हमारे के पास में तो क्त है, ककार की संज्ञा हुई तो त बचा, तकार का धकार हुआ एक सूत्र से, और अब हमारे पास में वर्ग चतुर्थ है और यहाँ पर भी झल वर्ण है। तो वर्ग चतुर्थ, यदि झल वर्ण के बाद वर्ग तृतीय अथवा वर्ग चतुर्थ आता है तो वो झल वर्ण है, उसका जश आदेश हो जाता है, तो वर्ग तृतीय आदेश होता है। तो बुध जो था उसका बुध हुआ, बुध और धी मिल गया बुद्धि। समझ में आया? हाँ। अत्र यशस् तथोर्धो धा धा धातुं विहाय अन्येषां धातूनां विषये
झष् वर्णात् परस्य तकारस्य थकारस्य च धकारः भवति। तो So this is प्रत्येक च वर्ग का भी चतुर्थ वर्ण है तो उसका तृतीय वर्ण आ जाएगा क्या? किसमें? च वर्ग ट वर्ग का चतुर्थ वर्ण। हाँ हाँ, जो भी होगा उसको तो तृतीय होना ही है। हाँ, ओके। लेकिन ध कब होगा? वो जब इसमें ये सूत्र है यशस तथोर धो ध, धा धातु विहाय, धा धातु को छोड़ करके अन्येषाम धातु नाम विषये जश वर्णात्, शश मतलब चतुर्थ, ओनली वर्ग चतुर्थ, जश वर्णात् परस्य तकारस्य थकारस्य वा चकार भवति धकारः भवति। So this is advanced sutras we are going on learning. Okay? Advanced. So अभी हम लोग जश्त्व ही कंप्लीट कर रहे हैं। पदांते जश्त्व हम लोग ने कर लिया, अभी पद मध्य अब अपदांत है उसमें हम लोग जश्त्व कर रहे हैं। अभी तक इसमें कोई संदेह है? इसमें नहीं। झलाम वर्ग चतुर्थ। हाँ कार्तिकेय जी वदतु। Sir, this in the Dulabash, I have the second line. I have one doubt, sir. This this Nishta again sutra I was seeing going through. कृतक तवतु निष्ठा। अच्छा, ओके। निष्ठा, ओके। कृत तवतु निष्ठा, उसको निष्ठा आदेश किया हुआ है, मतलब दोनों को संज्ञा दी गई है। कृत और तवतु प्रत्यय को निष्ठा संज्ञा मिली हुई है। तो इसीलिए खाली निष्ठा बोला लिखा है सूत्र ने। अच्छा सर, अच्छा, they are called निष्ठा संज्ञा। कृत एंड कृतवतु प्रत्यय आर कॉल्ड निष्ठा। ओके सर, धन्यवाद। तो निष्ठा इसी सूत्रेण डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस यू ऐड कृत और कृतवतु। थैंक यू सर। लभ एंड कृत, लब्ध एंड लब्ध। So this is happening within a word, and jhalam jasho ante was happening at the end of a padante. Just the ante itself is a reason for being the jashtva. Nimittam. Kevalam ante. Okay, that means it doesn't depend on whether any swara or any letter is following or not. It will always happen. If you see the difference, sir, this even in the Buddha becomes both. There also it is becoming the, of course, it is apadante. So it is not happening. It is not happening in the middle, sir. No, it is not happening because see, it is Buddha. It is not a. It is just a dhatu. Correct. It is not a padam. Yes. So we cannot use jhalam jasho ante. So correct. We are using jhalam jash jasi. Jasi. Yes. So for padante you will use that, and for apadante you will use this. This one. Okay. तर्हि अद्यतन पाठे यत् किमपि पाठितं मया तस्मिन् कापि शङ्का अस्ति वा? अन्यथा अस्य अद्यतन वर्गस्य विरामं कुर्मः। न सर। महोदय, आपने वो जो स्तोत्र में जलाम जशांते उसका विभक्ति रूप बताए, विभक्ति रूपाणी, वो क्यों क्यों बताए महोदय? वो अंते सप्तमी विभक्ति है ऐसा? हाँ, वो तो मैंने पहले भी किया है। हाँ, वो देखिए, जब भी आप षष्ठी विभक्ति देखते हैं तो कोई भी रिप्लेसमेंट होगा, रिप्लेसमेंट तो उसी के स्थान में होगा। जैसे स्तोहोश्चुनाश्चु, हम लोग स्तुत्व संधि का सूत्र है, तो स्तु का मतलब क्या? उकारांत शब्द है स्तु। जैसे गुरु शब्द है, तो गुरु की आपको षष्ठी क्या हुआ? गुरो हो। तो स्तु का स्तो हो षष्ठी होगी। तो मतलब स्तो हो मतलब जो जब षष्ठी होगी तो वॉट एवर परिवर्तन इज देयर इट विल हैपन इन दैट प्लेस ओनली। स्तो हो। ओके। तो वो स्तोत्र में ही वो सब पूरा क्लू बराबर लिखा हुआ है। जो विभक्ति पकड़ लीजिए, प्रथमा विभक्ति में जो होगा वो आदेश होगा। सप्तमी होगा वो उसका निमित्तम होगा, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर चेंजिंग इज हैपनिंग। अन्ते अत्र अन्ते पदान्ते अस्ति, अत्र दशिवर परे अस्ति।
अपदान्ते अस्ति तर्हि जश् वर्ण भवेत्, तश्। So this is the nimittam. So this is also in saptami. Saptami, astu. Okay. Astu. When we are having a panchami vibhakti, so whatever karya will happen after that. अस्तु धन्यवादः महोदय। नमस्ते। अन्येषां कापि शङ्का अस्ति वा? अस्तु, तर्हि वर्गस्य विरामं कुर्मः।